Sir. Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello and a warm welcome to Dr. Amitabh Banerjee. सर हर बार हमको बोलते रहते हैं भाई थोड़ा मौसम बदला, बारिश का मौसम है, जकाम common cold is accepted and it is mandatory, not in all. When the weather changes, when it becomes rainy, when relative humidity increases, some may get cold. And here during summer, because of dry weather, dust and all, you may get sneezings and cold. So is it COVID-19? You go for test because anyone who goes for test, they'll be positive under COVID-19. Why we have already shown you. सर जी आपको बताइए। नहीं देखिए, अभी तक हमको होता था तो उसका नाम नहीं था। अभी नाम दे दिया XYZ ABC JN1 ये वन वो वन, तो उससे इट गेट्स VIP स्टेटस। VIP वायरस है। जब VIP मूवमेंट होता है तो सब रोड ब्लॉक हो जाता है और कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो अभी ये VIP वायरस का है तो कोई दूसरे से लोग मर रहे हैं। अभी 6 डेथ हुआ है तो हल्ला हो रहा है, 6 डेथ हो गए कोविड से। डेली 6,000 डेथ होते हैं आपके चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू वगैरह मिला के बच्चे लोगों का 25,000 डेथ डेली होते हैं हमारे देश में। और 1400 डेथ हो जाते हैं TB से, जिसके की दवाई अभी मिल नहीं रहा है कई जगह। ऐसे BBC न्यूज़ ही आया है अभी 2 दिन पहले कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस दवाइयाँ नहीं मिल रहा है पेशेंट को इंडिया में। और कुछ महीने कहीं कहीं बेसिक TB के ड्रग्स नहीं मिल रहे और डेली TB से 1400 लोग मरते हैं। तो अगर आपको करना है तो TB का ये करो जिसमें कोविड से कोमोर्बिडिटी से डेथ होता है, डायरेक्ट वायरस से तो नहीं हो रहा है ना। अभी तक जो 6 डेथ हुए उसमें सब कोमोर्बिडिटी वाले हैं या जो भी है। 40 डेथ हुए हैं या 50 डेथ हुए हैं। एक महीने में खींच खांच के 50 डेथ बोलते हैं पर वो कोमोर्बिडिटी से हुए हैं। और डायरेक्ट डेथ TB से 1400 रोज होता है। 2000 बच्चे रोज मरते हैं। 400 लोग ट्रैफिक एक्सीडेंट से डेली देहांत हो जाता है यंग लोगों का। अब 400 लोग अगर ट्रैफिक एक्सीडेंट से डेथ होता है तो हमको मोटरसाइकिल बैन कर देना चाहिए, कार बैन कर देना चाहिए, ऑटोमोबाइल बैन कर देना चाहिए, है ना। जब आप मूवमेंट बैन कर सकते हो जिससे कोई डेथ नहीं हो रहा है, जिससे कि डायरेक्ट डेथ नहीं हो रहा वायरस से, उसके लिए आप मूवमेंट बंद कर देते हो, रिस्ट्रिक्शन करते हो। तो हमको ट्रैफिक एक्सीडेंट से हर दिन 400 एवरी डे 400 डेथ्स इन इंडिया, यंग पीपल एंड 10 टाइम्स डिसेबल्ड फॉर लाइफ। तो अगर उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा और बिगर हेलमेट के जा रहे हैं, बिगर सीट बेल्ट के जा रहे हैं, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, यहाँ पे आप मास्क और ये नाटक करते हो टू रन आफ्टर समथिंग विच हैज गॉट नो इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ। इट इज डिसरप्टिंग पब्लिक हेल्थ बाय डाइवर्टिंग अटेंशन फ्रॉम अ मेजर हेल्थ इशूज। वही मैं कह रहा ना, जब VIP मूवमेंट होता है आम जनता को कुचल दिया जाता है, आम जनता को कोई मिस कर जाता है अपना अपॉइंटमेंट, कोई एयरपोर्ट जाता है, रोड ब्लॉक हो जाता है। और मेन अभी हम वायरस में भी VIP वायरसेस आने लगे हैं। तो अभी जितने भी नए वायरस आएंगे सबको एक नाम दिया जाएगा और जिन जिन वायरसेस का नाम होगा उनको VIP स्टेटस मिलेगा। नया नाम है, पहले वाले नाम नहीं काउंट करेंगे, वो पुराने हो गए। TB भी हो गए, मलेरिया, TB, डेंगू, चिकनगुनिया। नए नाम वाले जो वायरस आएंगे पोस्ट कोविड एरा में, प्री कोविड एरा, पोस्ट कोविड एरा। पोस्ट कोविड एरा में एक एक वायरस को चुन चुन के वायरोलॉजिस्ट उसका जीनोमिक सर्वेलेंस करेंगे, उसको मल में ढूंढेंगे, सीवेज में ढूंढेंगे, कोई छींकेगा तो उसका कहाँ जा रहा है जाके वहाँ वेस्ट वाटर में ढूंढेंगे और उसको फिर बोलेंगे नया ये आ गया और फिर VIP स्टेटस मिलेगा। और उससे जो मर रहा है वो नहीं देखेंगे, दूसरा कोमोबिडिटी का उसको इलाज नहीं होगा। वायरस कोइंसिडेंटल होगा, कोमोबिडिटी से मरेगा, बदनाम वायरस होगा और VIP स्टेटस बढ़ जाएगा उसका। So this is what is biggest thing from this show. VIP status for ordinary virus like common cold, whenever weather changes, whenever you inhale dust, fine dust, when you get wet in the rain, when the body is at a low ebb because you did not take food or you are too tired out working and all. So your immunity levels are very low. Otherwise, when your body full and when you are enjoying, nothing, everything will pass away. Dust and rain, you will be very happy. So for such a reason, why this panic and these tests? Is it only to pamper pharmaceutical companies and through electoral bonds, that money is going to companies, corporate, political parties and politicians? Is that the reason why they want World Health Organization like structure
to sign a pandemic treaty. Every time pandemic treaty. Why pandemic treaty? That means you are subjugating your rights, your right to health, right to life, and without your knowledge, the country having signed, they will declare pandemic and they say you sit at home, don't go out, you take this vaccine and you take this medicine, because you are coughing, you take this test. This will become another China wherein there is no democracy. Why I'm saying another China, they want to turn the world, there is no democracy. If you speak, they will test, they will inject poisons into your body. If I am not wrong, reveal the contents of vaccines, reveal the contents of remdesivir, reveal the content of all the drugs and new vaccines which you are going to propose, Mr. Modi and the cabinet of India, and including Indian Council of Medical Research. That is why did and India has to sign this pandemic treaty? We are showing you how they want to create panic and fear out of a small thing like common cold and give different names where there is no science, there is no truth, and no logic at all. That's why, again, we are doing this series. Let me start playing you the videos. Why we are doing this series is because of this. Wants all countries to sign an agreement on handing over the authority to declare a pandemic, procure vaccine and drugs. It will be healthier and safer for humanity to sign agreement with the Colombian drug cartel. They know all about drugs for sure. During the COVID pandemic, World Health Organization only told lies. It should be declared a terroristic organization. They lied. That is a new and known virus. That is possible to make an effective vaccine. That the vaccine is 82% effective. That it protects against serious illness and deaths. That all, of course, were foolish and lies. Today, World Health Organization is more dangerous for humanity than World Economic Forum. Thank you. The World Health Organization wants all countries to sign an agreement on handing over the authority to declare a pandemic, procure vaccine and drugs. It will be healthier and safer for humanity to sign agreement with the Colombian drug cartel. They know all about drugs for sure. During the COVID pandemic, World Health Organization only told lies. It should be declared a terroristic organization. They lied. That is a new and known virus. That is possible to make an effective vaccine. That the vaccine is 82% effective. That it protects against serious illness and deaths. That all, of course, were foolish and lies. Today, World Health Organization is more dangerous for humanity than World Economic Forum. Thank you. Yeah, I'll come back to you, sir, once off. 4 to 8 times as many of these conditions: asthma, allergies, allergic rhinitis, breathing issues, behavioral issues, ADD, ADHD, infections of all kinds. We're talking respiratory, ear infections, eye infections, and then all the eczema, dermatitis, skin problems, and anemia. The one that kind of I just have to chuckle on is infections. I mean, you and I have talked on vaccines before. You know, people are told you need to vaccinate to protect grandma or to protect that poor immunocompromised patient. But the truth of the matter is, and my data showed this conclusively, it is the highly vaccinated who are getting sick with infections, not the unvaccinated. The unvaccinated, clearly something's going on. And Dr. Baker, you and I have talked about this. It's the natural, inborn, innate immune system is powerful and gets disrupted by vaccines. So unvaccinated kids are healthier, are less ill, therefore they are less likely to make someone else sick. They are actually the ones providing protection, if you will, that herd immunity that's the sort of what we're trying to get supposedly by vaccinating. So that really transformed my understanding. I mean, I was pretty close to getting there anyway, because in my practice, I was seeing, you know, I was uniquely in a position to see fully vaccinated kids, which were unvaccinated children are generally raised by parents who understand the holistic nature of
limiting toxicity as much as humanly possible, right? There are things that we can not control. And I used to say that environment and lifestyle were the same, and that in that sameness, like we would just. Sir ji, your comments in Hindi. हाँ, ये देखिए, सबसे पहले वाले वीडियो में बोले हैं WHO फार्मा प्रमोट करते हैं, वैक्सीन प्रमोट करते हैं, डेंजरस, मोर डेंजरस देन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और एक्चुअली अगर हम आंकड़े के साथ चले, सबूत के साथ चले, तो उन्होंने कहा कि पहला क्लेम क्या था कि कोविड वैक्सीन 82% इफेक्टिव, 82% इफेक्टिव। और तब तक डेटा आ गया था कि इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट 0.1 से भी कम है। मतलब नेचुरल अगर इन्फेक्शन आपको वायरस से हो जाए तो आपका 99.9% सर्वाइवल का चांस है। अब बिगर वैक्सीन का अगर जब 99.9 सर्वाइवल है और 82% इफेक्टिविटी को आप कैसे इवेल्युएट करेंगे? मतलब वैक्सीन का इफेक्टिविटी इज लेस देन द नेचुरल इन्फेक्शन। मतलब ये सिंपल अरिथमेटिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे को पहले से ही नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे। मैं मेरा बात हो चुका है, इसके ऊपर तर्क हो चुका है प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के। मैंने बोला डॉक्टर साहब हमको ये समझा दीजिए कि 99.9% जिस वायरस का सर्वाइवल है उसमें आप जो वैक्सीन ले रहे हैं उसका 82% ही बचाव है, और नॉर्मल इन्फेक्शन से तो 99.9% बचाव है हमको। और उसका जो इम्यूनिटी बताते हैं, जैसे दूसरे वीडियो में बता रहे थे कि नेचुरल इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। एक्चुअली उसका एक और कारण है। अब जो रेस्पिरेटरी वायरसेस है वो हमारे नाक से, गले से, अपने फेफड़े से जाते हैं, तो वहाँ पे लोकल इम्यूनिटी ज़्यादा काम आता है, IgA IgE। अब जब आप वैक्सीन देते हो, वो जो एंटीबॉडीज रहते हैं आपके IgG IgM, वो ब्लड में रहते हैं। तो वो ब्लड में रहते हैं और इन्फेक्शन आपका इधर हो रहा है रेस्पिरेटरी पैसेजेस में, वो वहाँ पे वायरस एंट्री हो जाता है। तो इसका मतलब है आपका पास जो बंदूक है वो बेडरूम में रखा है, और ड्राइंग रूम में आके डकैत आके चोर मार मुड़ के चला जाता है। जब तक आप बेडरूम से बंदूक को लाओगे तब तक वो हो जाएगा। तो इसीलिए इसीलिए जो जो नेचुरल इन्फेक्शन से जो रिकवर होते हैं उनको म्यूकोजल इम्यूनिटी रहता है, जिसमें IgA IgE वगैरह रहता है। Wonderful. तो ये जितने भी रेस्पिरेटरी वायरसेस के जो वैक्सीन है, इसीलिए इनका एफिकेसी डाउन रहता है, चाहे इन्फ्लुएंजा भी हो चाहे कोविड भी हो, क्योंकि वो उधर रखा है आपका बेडरूम में बंदूक, और डकैती ड्राइंग रूम से हो जाता है। वंडरफुल। और आप और एक बात भी है कि आप टेस्ट भी नाक से करते हैं, आप खून के साथ नहीं करते। आप हाँ RT-PCR का हाँ, टेस्ट जो है नाक में लगा के करते हैं। वो तो नाक में आपको कोई भी वायरस आप उठा सकते हैं, हाँ, बिकॉज जब उठा ये सकते नॉर्मल कॉमन कोल्ड, मतलब कॉमन है वायरस, तो हैं। कोरोना वायरस इज द कॉमन कोल्ड फैमिली का है। राइट। तो आप अगर किसी को, अगर VIP को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अभी जैसे न्यूज़ में आता है कि उसके जो भी मिलने आएगा मिनिस्टर वो RT-PCR करेगा, उसका फिर पूरा करो ना। उसका स्टेफेलोकोकल उसके स्किन में होगा, जो भी बहुत घातक इन्फेक्शन कर सकता है, स्टेफेलोकोकल रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्टेफेलोकोकस। उसके नाक में स्टेफेलोकोकस होगा, थ्रोट में स्टेप्टोकोकस होगा, मेनियो। कितने अगर ढूंढोगे तो कई 25% को मिल जाएंगे आपको, कोविड से 1000 गुना ज़्यादा डेंजरस पैथोजन अगर वो करता है तो। और आप खाली एक हल्के इसको इसलिए कर रहे हैं, इसका इसका भी मेरे को लगता है कि काफी सोच समझ के किया है। क्योंकि अगर इतने हल्के वायरस का अगर आप वो वैक्सीन बनाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि वैक्सीन काम नहीं कर रहा है। आपको खाली प्रमोट करना है। हाँ, प्रमोट करना है, आपको लेकिन प्रमोट करना है। जो भी मर रहे हैं, प्रोपेगेंडा, वैक्सीन के डेथ्स जो भी हो रहे हैं, फिर उसको गुमराह करके फिर नया एक स्ट्रेन बना रहे उसको हैं। लॉन्ग कोविड, उसको बताना लॉन्ग कोविड है वो। राइट। और दूसरी बात है, जैसे आपको खाली उसको प्रमोट करना है, प्रोपेगेंडा करना। हम बचपन में जो पढ़ते थे ना, राजा के नए कपड़े, वो राजा के नए कपड़े वाले ने कपड़े नहीं दिए हैं, फिर भी इतना प्रोपेगेंडा किया कि हर कोई सोच रहा कि राजा ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। हाँ, तो ये ऐसा है कि वैक्सीन 82% इफेक्टिव है, और नेचुरल इन्फेक्शन 99.9% सर्वाइवल है। ये पहले से ही ऐसे कैसे, मेरे को ये बड़ा ताजुब लगता है कि पूरा दुनिया कैसे इस बहकावे में आ गया, द होल वर्ल्ड फॉर सो लॉन्ग। मतलब वो कहते हैं ना, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम। कुछ लोगों को आप बना सकते हो कुछ दिन के लिए, पर पूरे लोगों को कई सालों तक, 5 साल से, अभी लगता है अभी चल नहीं रहा है उनका नैरेटिव, चल नहीं रहा है। तो अभी लोगों को समझ में आ रहा है, पर अभी लोगों को बहुत अभी शर्म आएगा बोलने के लिए, कबूल करने के लिए कि हम ऐसे बन गए। उल्लू बन हमको गए। We have been fooled
for lifelong. So let me just give you some scientific evidences also. शास्त्रीयता भी हम उसके ऊपर हम थोड़ा दृष्टि डालेंगे. So I get on the computer and have access to it, and I start plugging in ICD codes. And the numbers are just unreal. So I call Lieutenant Colonel Pete Chambers. My name is Pete Constantine Chambers, retired Lieutenant Colonel, United States Army Special Operations. I was also a flight surgeon with the United States Army Green Berets. When I lost the ability to go to my command, I went to a congressman. I went to 2 congressmen. I went to 3. Nobody wanted to talk about it until finally Senator Johnson came forward and said, I'm looking for whistleblowers. And I had been talking to Dr. Teresa Long, a Lieutenant Colonel, flight surgeon out of Fort Rucker, Alabama. And she said, look at the DMED data, Defense Medical Epidemiology Database. Look at that data. I pulled up the DMED data and went, whoa, neurologic events up 1,100% since the shots rolled out. 11x rise. Myelitis, for instance, that is higher than would be expected. This is what has happened after So vaccine. this is transverse myelitis. So essentially 2021 had as many cases as the preceding 4 or 5 years before it. That's the main part of defining a safety signal. Is it out of the ordinary? I don't have to be able to make a connection yet. Average number of adverse event reports to VAERS over the past 30 years for all vaccines combined is 39,000, more or less. Compare that to over 700,000 reports. You don't have to consider it to see a deplorable safety profile. There's a database that exists in the government realm called the Social Security Administration Death Master File. And this file has roughly 90 million records in it. And it captures 85 to 90% of deaths in the United States. So what I did was compare each month for the prior 5 years. For these mRNA vaccines, there is incredible BS out there about like thousands of people dying, et cetera. That just ain't true. We are seeing right now the highest death rates we have ever seen in the history of this business. It's not just at One America. The data is consistent across every player in that business. When comparing the DMED data to VAERS and to other data banks around the world, to include actuaries from insurance companies, when you compare those, they virtually line up the same. I don't want to think that these things are so dangerous that they're causing this much excess and injuries in my fellow people. But it really, really looks like that's The DMED. So Yeah, we just wanted to give you a scientific evidence that is one of it. And such it clearly establishes now what World Health Organization has to say and why India is signing a pandemic agreement. Is this because of this fellow? Population growth, that's this big benefit. The key thing you can do to reduce population growth is actually improve health. In the developed countries, the big winners are countries that have shrinking populations. I would like to reduce the number of people on the planet because there's too many of us. When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, Wait. What the? more of our children can breathe clean air and drink clean water. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that. We're taking things that are, genetically modified organisms and we're injecting them in little kids' arms. We just shoot them right into the vein. So in the next 5 to 10 years, for the next pandemic, we'll solve all those problems. You say the next pandemic, there will be another pandemic. Absolutely. We don't know when. History teaches us that the next pandemic is a matter of when, not if. We know what's next. We're going to have another major coronavirus pandemic before the end of this decade, before 2030. If we really want to prevent the next pandemic, and there will be one, there will absolutely be an outbreak of another pandemic. It may be next year. We need more money to plan for the second pandemic. There's going to be another pandemic. We have to think ahead.
We definitively will have to face other surprises, black swans, as they are called, and maybe different kinds of viruses. But also there will be a surprise outbreak. Most of the work we're going to do to be ready for pandemic 2, I call this pandemic 1. We just need to mess around. The EPA recently approved an experimental use permit to Oxitec, a biotech company funded by the Bill and Melinda Gates Foundation. In an effort to fight malaria, Oxitec will soon release millions of genetically modified mosquitoes in various U.S. states. Programs are being developed to allow human immunization via mosquito bite. It was Science magazine that coined the phrase, flying syringes. Just then, by sheer coincidence. Oxford, Massachusetts, and 3 neighboring towns have a reason for concern as mosquitoes carrying a potentially deadly virus called Eastern Equine Encephalitis, or Triple E. Yeah, that is why what this gentleman has done, he has removed almost all these things, fired the entire AIC Vaccine Review Board, the Commando Kennedy. He has fired all of them. And CDC needs to decide whether or not to add that vaccine to the schedule. This committee has really the frightening power to create a liability-free captive market of 74 million American children with guaranteed payment to the manufacturers. This committee has the power to create billions of dollars in profit for the pharmaceutical industry. Of all the committees in the country, of all the committees in the world, this is the one committee that should be absolutely free of financial conflicts of interest with the pharmaceutical industry. And yet the opposite is true. This was a year to... Yeah, this was before he became A, and he has removed all that committee which was being controlled by World Health Organization and the Biden administration then. So he has just fired them. Vaccinated families are finally going to have a voice. So this is how, and this also I've shown you, and this also how Bill Gates is trying to influence, and why India is associating with Bill Gates is in Lancet, New England Journal of Medicine, JAMA, and those other journals, because they're all corrupt. And even the heads of those journals, like Marcia Engel, who for 20 years was the head of the New England Journal of Medicine, says that we no longer are a science journal, we are a vessel for pharmaceutical propaganda. No kidding. Because they control the journals. They buy the preprints, right? Which is, and they finance you. If you want to publish in a journal, you have to pay $10,000 to get the study published. And so what we're going to do is change the system and say you can't, Richard Horton was the head of the Lancet, who really disgraced himself during COVID with the Lancet letter and all that. I remember. But he says the same thing. He says, we are no longer science journals. We are about promoting pharmaceutical products, and that's what we do. So unless these journals change dramatically, we are going to stop NIH scientists from publishing there, and we're going to create our own journals in-house in each of the institutes. And they will become the preeminent. 2 major decisions. He has fired all that committee which was recommending the tests and trials and vaccines and drugs. And then second, Lancet, New England Journal of Medicine, JAMA, and those other journals, they are not going to publish anything in them because they have got conflicts of interest. They are in association with pharmaceutical companies. So just last, I'll just show you this video also. The firing of ABC News Live reports. This is straight into our newsroom. We've learned that Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr. is announcing his plans to remove and replace all 17 members of the CDC's Vaccine Advisory Committee. Now, this committee makes the recommendations on the safety and efficacy of the vaccines. RFK Jr. says that replacing the members is, quote, a step toward restoring a public trust in vaccines. Now, he hasn't named any replacements yet, but of course, this follows a recent move from the health secretary who narrowed the recommendation for annual COVID-19 vaccines to those 65 and older and those with higher risk of getting severe. This is one thing, I think, Dr. Agnes Dalgish on COVID vaccines. This is Nuremberg trial stuff. Listen to him.
dreadful use of vaccines and the mandates that have caused so much problem. And it's very clear now that why on earth did they do this? I mean, I have no idea, because from the very beginning, these vaccines were not vaccines, particularly the ones that ended up after AstraZeneca with all the clots and they were shut down. But the messenger RNA vaccines of Pfizer and Moderna have caused unbelievable problems and damage to people. And I don't think we will ever really be able to get over that. It was absolutely abhorrent that they would even think of this. And they were pushed into this by Pfizer and all the people that Pfizer and Moderna wanted to get this into absolutely everybody. These were not vaccines. These were horrible gene therapies that could actually integrate into your genome. And I think we're here today to discuss the dreadful use of vaccines and the mandates that have caused so much problem. And it's very clear now that why on earth did they do this? I mean, I have no idea, because from the very beginning, these vaccines were not, and this is one of the reasons we're seeing this horrendous rise in turbo cancers. I'm terrified what they've done to our children. I think everybody who went along to that should actually stand up to trial, defend themselves and go to court. This is unbelievable, the incompetence, medical negligence, everything, and nobody is accepting responsibility for this. And they have to be held. This is Nuremberg trial stuff. They are so awful. They were never, ever effective. I've looked at the first submissions of Pfizer to the FDA. There was no evidence that they were effective whatsoever. Basically hope. And they were never, ever safe. And this is one of the reasons we're seeing this horrendous rise in turbo cancers. I'm terrified what they have done to our children. I think everybody who went along to that should actually stand up to. सर जी आप हिंदी में बताइए और किस तरह ये गेम खेला गया. So they're horrendous. They were never effective. They were never safe. And Pfizer and Moderna and mRNA technologies are causing more cancers in children than before. This is horrific, Sarji. And I'll also show how they have managed in the later one. Please, sir, go ahead. हाँ, ये पहले तो रॉबर्ट कैनेडी जूनियर ने स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने सीडीसी के 17 स्टाफ जो थे, जो वैक्सीन एडवाइजरी कमेटी में, पूरे को चेंज कर दिए, क्योंकि उनके बड़े सीरियस कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट थे. तो हमको इंडियन कंटेक्स्ट में पूछना है कि हमारा एंटागी का क्या स्टेटस है. हमारे एंटागी ने जब चिल्ड्रन वैक्सीन के अगेंस्ट रिकमेंड किया था कि बच्चों को ज़रूरत नहीं है, तो हमारे एक्सपर्ट कमेटी होने के बाद भी वो किसने डिसीजन लिया कि चिल्ड्रन को वैक्सीन रोल आउट किया. ये एक क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ भी. पता नहीं हमारे यहाँ इंक्वायरी क्यों नहीं हो रहा है. दूसरा हो रहा है कि इन्होंने वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स इन्होंने बताया कि डेटा बताता है कि ये कोविड वैक्सीन के पहले 39,000 थे, उसके बाद 700 कई गुना ज़्यादा वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स आए आफ्टर कोविड. तो इसमें डेटा क्लियरली बता रहा है कि काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स थे. तो हमारे इतना लार्ज कंट्री है और हमारे सबसे लार्जेस्ट वैक्सीनेशन रोल आउट में हमारा वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स का सर्वेलेंस क्यों नहीं है? एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन का सर्वेलेंस क्यों नहीं है? यहाँ पे हम वायरस का और जीनोमिक सर्वेलेंस कर रहे हैं, हम टट्टी पेशाब में सर्वेलेंस कर रहे हैं, सीवेज में सर्वेलेंस कर रहे हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा एक्सपेरिमेंटल यूज वैक्सीन के लिए, हमारा सर्वेलेंस ऑफ वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स क्यों नहीं एस्टेब्लिश किया? 5 साल हो गए, क्यों नहीं ये डेटा है हमारे पास? और हमारे यहाँ जो वैक्सीन यूज़ किया था 80-90% पॉपुलेशन को दिया था, वो कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका था, जिसको कि 2 साल पहले खुद विड्रॉ कर लिया है, मैन्युफैक्चरर ने खुद विड्रॉ कर लिया है. और इसका मतलब mRNA वैक्सीन तो अभी मैन्युफैक्चरर ने विड्रॉ किया है. तो इसका मतलब कोविशील्ड ऑल्सो हैड सीरियस साइड इफेक्ट्स, परहैप्स मोर देन mRNA वैक्सीन. उसमें हमारे यहाँ कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई क्वेश्चनिंग नहीं है, कोई कमेटी नहीं बैठा है इसको जांच करने के लिए. तो हम यही बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, मेडिकल जर्नल का उन्होंने बोला, सही बोला. लैंसेट, न्यू इंग्लैंड जर्नल पूरे कब्जे में थे फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, और दे हैड बिकम अ प्रमोशन आर्म ऑफ फार्मा इंडस्ट्री इंस्टेड ऑफ अनबायस्ड साइंस. इसमें कोई दो मत नहीं है, एडिटर्स का दिया है.
और तीसरा ये आप बताए जो वीडियो है, एंगस डलगिस, ये लीडिंग कैंसर स्पेशलिस्ट है, वर्ल्ड के लीडिंग कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। इनका कहना है इनके प्रैक्टिस में इन्होंने कभी इतने कैंसर्स का रिसर्जेंस नहीं देखा। जो कैंसर ठीक हो गए थे, जो वैक्सीन रोल आउट के बाद इतने ज़्यादा कैंसर्स इन्होंने लाइफ में नहीं देखा। इतने एक्सपीरियंस्ड सर्जन है, कैंसर स्पेशलिस्ट है, कैंसर स्पेशलिस्ट है। इन्होंने वर्ल्ड लीडिंग कैंसर स्पेशलिस्ट ने कभी इतने केसेस देखे नहीं कैंसर के जितने कि इन्होंने वैक्सीन रोल आउट के बाद देखे। जो कैंसर दब गए थे वो कैसे, क्योंकि उनका कहना है कि ये वैक्सीन नहीं है, ये जीन है, जीन थेरेपी है। और ऐसे ही पीटर मैकुलो ने भी पिछले हफ्ते टेस्टिमोनी दिया था सीनेट में कि उन्होंने मायोकार्डिटिस केसेस, वो लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट है वर्ल्ड के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने इतने मायोकार्डिटिस केसेस अपने लाइफ में नहीं देखे। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स है। और हमारा कंट्री में ना साइंटिफिक कम्युनिटी चुप है, और पॉलिटिकल कम्युनिटी तो चुप है, और ना ही पीपल से कोई डिमांड है कि इसका इंक्वायरी हो। ये एक बताता हूँ किस तरह गुमराह किया है, हाउ फाइजर हैज डू। At the time, right? But that's not actually what that number means. That 95% refers to the relative risk reduction, but it doesn't tell you how much your overall risk is reduced by vaccination. For that, we need absolute risk reduction. In the Pfizer trial, 8 out of 18,198 people who were given the vaccine developed COVID-19. In the unvaccinated placebo group, 162 people got it, which means that even without the vaccine, the risk of contracting COVID-19 was extremely low at 0.88%, which the vaccine then reduced to 0.04%. So the net benefit, or the absolute risk reduction that you're being offered with a Pfizer vaccine, is 0.84%. That 95% number, that refers to the relative difference between 0.88 and 0.04%. That's what they call 95% relative risk reduction. And relative risk reduction is well known to be a misleading number, which is why the FDA recommends using absolute risk reduction instead. Which begs the question, how many people would have chosen to take the COVID-19 vaccines had they understood that they offered less than 1% benefit? You're entitled to know the risks and side effects. In Canada, any potentially serious risk must be disclosed. यस सर जी। ये देखिए मैं तो पहले ही बता रहा था कि ये तो इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म करके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रिलेटिव रिस्क मतलब ट्रायल में अगर कोई चीज़ का ऐसे ही बहुत कम है, अगर 0.1% डेथ है, जैसे हमने बताया था इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट 99.9% सर्वाइवल है, आप उनमें से 0.1 को लिया और दो ग्रुप में बता दिया तो आपस में कंपैरिजन करके लैब में वो आता है। पर जब एक्चुअल रिस्क ओवरऑल ही कम है पॉपुलेशन में, तो 1% से भी कम होता है। मतलब एक्चुअल पॉपुलेशन लेवल में अगर आम जनता वैक्सीन लेता है तो कोविड वैक्सीन का प्रोटेक्शन वाज लेस देन 1%। 95% इज फॉर अ लैब कंडीशंस, वो कंपैरिजन। पर इतना बोलने की भी जरूरत नहीं है। जब इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट 0.1 है, 99.9 आप ऐसे ही सर्वाइव होंगे, और वैक्सीन खुद ही बोल रहा हम 82% प्रोटेक्शन देंगे, तो 99 तो हमको नेचुरल इन्फेक्शन हमको 99% हमको बचा के रख रहा है, हमको बचा के रख रहा है ना, 99.9 को बचा के रख रहा है, मतलब हमको प्रोटेक्ट करके रख रहा है। और वैक्सीन कहता है मैं 82% को बचा के रखूंगा। तो वो वैसा भी देखा जाए तो उस एंगल से भी इट इज, मैंने फॉर सच अ डिजीज इट इज नॉट वर्थ द इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च एंड ये टू डेवलप अ वैक्सीन, क्योंकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर वो सब बनाने में लग जाते हैं, और एक बार आपने बना लिया वैक्सीन तो आपको वसूल करने में तो आपको प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा, डराना, तो क्रिएट फियर। सो ये इसमें इस अनफॉर्चुनेट है। आई मीन इसमें क्या है कि कुछ डिजीज में सही में वैक्सीन होगा जहां पे मोर्टेलिटी ज्यादा है, 10% 20% टिटेनस में, वो लोगों का फेथ उसमें भी चला जाएगा। अभी नाउ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग बैक ट्रस्ट इन पीपल। तो ये बहुत बड़ा लॉस किया इन्होंने, बहुत बड़ा सोशल हार्म किया, बहुत बड़ा मेडिकल रेपुटेशन का हार्म किया। जेन्युइन लोगों को ट्रस्ट नहीं करेंगे, लोग जेन्युइन मेडिसिन को ट्रस्ट नहीं करेंगे, जेन्युइन वैक्सीन को नहीं ट्रस्ट करेंगे। इट इज बिकम वेरी वेरी, बहुत इन्होंने हार्म किया है, इरिवर्सिबल हार्म किया है। ये जितने भी पॉलिसी मेकर्स थे, जितने भी डिसीजन मेकर्स थे, और अभी इनको अगर अकाउंटेबल नहीं करोगे तो ये फिर से पेंडेमिक चालू हो जाएगा, फिर से ये गेम चालू हो जाएगा। फिर से गेम चालू हो जाएगा। एंड जाते जाते आपका वो एक फेमस ये अच्छा हुआ,
नाक में जब ये वायरसेस जो भी है, the viruses, the cold viruses we call, I'm using the commonest term so that common man can, the commonest cold is found in the throat or in the nose and all. It is best example when it is there, it is comparing this like a drawing room and it is the blood like a bedroom. When you are injecting vaccines into the blood, it is like a bedroom. And when something infection is happening like in the nostrils and it is like a drawing room. When the robbery is happening in the drawing room, what is the fun of having a gun in the bedroom? आपको लोकल इम्यूनिटी चाहिए ना, जो कि नेचुरल इन्फेक्शन से होता है। म्यूकोजा, उसका जो लाइनिंग होता है, नोज का लाइनिंग, थ्रोट का, आपके लंग्स के, वो एपिथेलियल म्यूकोजल इम्यूनिटी आता है, वो इन्फेक्शन से ही हो सकता है। ऐसे बंदूक वहां रख के फायदा नहीं, ड्राइंग रूम में रख के। And again, they may prepare mucosal vaccines. There also, again, you should be careful. Why? Why? Because COVID-19 is in itself a restrictive virus, as they claimed by WHO, all records, India, everywhere in the world. 99.99% recovery on its own quarantine. Then why vaccines? Why this fear? Time and again. And then too, when everyone has got a natural immunity. That is why we say, when they are creating a fear, by papers or channels, you question them, put that in writing, ask them for where are you getting these figures, which panchayat, which district, which state, what is their name, and why you are doing test only for COVID-19. Why? Because TB, dengue, malaria, typhoid, daily accidents and vitamin deficiency disorders, many people, thousands of people are dying because of this. Why are you not testing them? That is the biggest exposure of this show. Anything else, sir, before we wind up? Diversion of funds. We have got diversion of public funds. Just chasing one very mild virus takes away the funds from genuine public health problems. तो जिसमें और ये प्रॉब्लम है, हम नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में आ जाते बाकी, और पीपल आर सफरिंग एंड अननेसेसरी पैनिक भी हो रहा है, और प्रॉफिट टू दी फार्मा हो रहा है, प्रॉफिट टू फार्मास्यूटिकल्स हो रहा है। वो जानबूझ के हल्का बीमारी का वैक्सीन प्रोमोट करते हैं और बीमारी को प्रोपेगेंडा करके लीथल प्रोजेक्ट करते हैं। तो उससे वो साइकोलॉजिकल गेम्स हैं। पीपल शुड बी अवेयर, और अभी मेरे को लगता है शायद इस बार अवेयर हो गए। इस बार इतना चीख चीख के चिल्ला रहे हैं, फिर भी लोग, कम ही लोग मास्क पहन रहे हैं। उसी से दैट इज द इंडिकेटर ऑफ हाउ मच पीपल आर फूल्ड। कुछ तो फूल रहेंगे, वो जिंदगी भर मास्क पहने रहेंगे, बट 99.9% पीपल आर नॉट वेयरिंग मास्क, so that's a very good sign. That is a very good sign. My number is 9440465339. We discuss science, truth, logic, that too as per rule of law, constitution, invoking evidential act. Anyone willing, differing with us, you are most welcome to come and debate. I will connect you from wherever you are. My number is 9440465339. You can send any material through WhatsApp, but it should be as per rule of science, truthfully, logically, and as per rule of law. We are going to discuss without enmity against any individuals, nor animosity against any parties or organizations. That is why people of India and the world awake. Common cold, because of changes of weather, you will sneeze, you will cough, and natural immunity will come on its own, and also the running nose, and that we have been watching for decades enough. So be careful, don't get panic, check in and around in your own vicinity, you will understand there is no infection. Then from where these numbers are coming, why they are promoting this fear, you are the better judge. Take care. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr.